Okay. So, okay. Good afternoon, all of you. So, आप लोग अपनी चेयर्स को थोड़ा अप कर लो, उधर जो बैठे हैं वो भी सारे लोग. So basically in this discussion we'll discuss the Gauss-Seidel method. Okay, जो online है, I think है क्या online वही? Okay, so basically मैं कुछ information देना चाहूँगा कि like you can join it in a hybrid mode. आप यहाँ आके भी इसको join कर सकते हैं. Otherwise जो online platform है उस पे भी आप इसको join कर सकते हैं. And next we'll have मैक्सिमम 3 to 4 सेमिनार एंड उसके बाद में हम इसको कंप्लीट करेंगे. बेसिकली हमारा जो एम था कि हम 4 से 5 टॉपिक करेंगे तो वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा. ओके, लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप जब भी चाहें तब उसको देख सकते हैं. एंड बेसिकली मेन एम जो था इसका कि लाइक आपको पाइथन से रिलेटेड हमें थोड़ा ना उसको फेमिलियर करना था, न्यूमेरिकल मेथड्स एंड ऑल से, तो वो हमने करने की कोशिश की. एंड मेन है इसका प्रैक्टिस, जो कि आपको सूडो कोड्स हमने प्रोवाइड करा है, उन सूडो कोड से आपको करना. ठीक है, ओके, क्लियर है ना? तो नेक्स्ट 3 से 4 सेमिनार्स होंगे एंड देन इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम आवर साइड कि सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ कोर्स कंप्लीशन एंड पार्टिसिपेशन उनको ही दिया जाएगा जो एक मिनिमम क्राइटेरिया को फॉलो करेगा. तो बेसिकली मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? सिंपल सा, एक तो अटेंडेंस का मिनिमम क्राइटेरिया इफ इट इज आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन. एंड नेक्स्ट विल बी जितने भी आपने टेस्ट अटेंड किए हैं बेसिकली, तो टेस्ट का स्कोर वो मायने नहीं रखेगा, इट डजंट मैटर. टेस्ट अटेंड कितना किया है उस पर बेस्ड जो होगा वो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टीशन एंड कंप्लीशन होगा. ओके, क्लियर? ओके, सो स्क्रीन पे आपको पीपीटी शेयर हो रही है. उस पीपीटी में हमने पूरा कंटेंट अपलोड कर रखा है. आज का जो भी सेक्शन है उसमें हम डिस्कस करेंगे. एक सेकेंड. ओके, सो दिस इज द टॉपिक जिसमें हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेसिकली. तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने वी हैव डिस्कस्ड गॉस एलिमिनेशन मेथड. ओके, सो बेसिकली गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था? वी कंस्ट्रक्ट सिस्टम, वी कंस्ट्रक्ट ax इज इक्वल्स टू बी अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन एंड बेसिकली उसके बाद हमने क्या किया था? उसको पूरा सिंप्लीफाई किया था. तो in this case we'll discuss first Gauss-Seidel. Okay, so basically Gauss-Seidel जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और उससे पहले हमें जो उसका डायगनली डोमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, वो हमें थोड़ा सा डिस्कस करना है. तो हम सबसे पहले इसमें डायगनली डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे एंड देन विल डिस्कस गॉस-सीडल मेथड. Okay, diagonally dominant is the important key for the method, and the numerical method is whatever we are solving the Jacobi iteration method or Gauss-Seidel, which is also a iterative method. We'll discuss for that. So Gauss, we'll discuss the diagonally dominant concept of a matrix. Okay, whenever we have a matrix, or especially whenever we have a n cross n matrix, it is like there is a diagonal. Okay, and a diagonal is what? The all elements where it is aij, all are the element where I is equals to j, it is called the diagonal. Okay, so it is called the diagonal entries. It is only for the square matrix, so this is very important. So what is the concept of diagonally dominant? That we'll discuss in this discussion. Okay, so basically first the concept of diagonally dominant will discuss, and then Gauss-Seidel method will discuss, and the pseudocode for the Gauss-Seidel method of the related to Python, and example and pseudocode, and then we'll discuss the pseudocode of diagonally dominant also.
Okay, so in the diagonally dominant, we'll discuss 3 to 4 section. Is what first will be the definition of diagonal dominant. What is the diagonally dominant, and further we'll discuss how to check the diagonally dominancy of the matrix. If your matrix is not diagonally dominant, how will you convert the diagonal the matrix into a diagonally dominant matrix? And what is the application of diagonal dominant, and why diagonal dominant is required for such type of numerical methods like Gauss elimination method, Gauss-Seidel method and Gauss-Jacobi method. What is the need of diagonal dominant? We'll discuss further. Okay, so basically, come to the first section is what the concept of diagonal dominant. So first of all, whenever we have a square matrix, that is what matrix is n cross n matrix, and the element of matrix which I am representing by the Aij. Aij is my all element of. You are familiar with the matrix, and all entries are basically Aij, where I is run from 1 to n and j is run from 1 to n. Keep in your mind that Python indexes will start from 0. Okay, so in the Python, your matrix that we have discussed in the basic course of the matrix, that how to insert or how to construct a matrix using Python. So in Python especially, the index will start from 0. So basically, I will starts in the Python whenever you are writing the Python code, that will be I starting from 0. Okay, it is from 0 to n minus 0 to n. It will be 0 to n minus 1. Because of that, you are wishing to construct a 3 cross 3 matrix. So it will starts I is equals to 0, 1 and 2. It will be n minus 1. In your for loop, like Python will considered n minus 1 index. So it will be 0, 1 and 2. We are wishing to construct a 3 cross 3 matrix. Then what will be the element? Basically 0, 1 element. Okay, 0, 0 element, and then 0, 1 element, 0, 2 element. Okay, and next element will next will be the 0, 1, 0 element, and whatever it is 1, 1 element, and next will be 1, 2 element. Okay, next, diagonal elements or diagonal entries are called all AIJs, which is called, I am saying, the diagonal entries. Diagonal entries is what? Aij, where my I is equals to j. It means whatever it is in diagonal, that is called the diagonal element. And especially whenever we are solving the numerical methods, or basically system of linear equation, where we are using the matrix, that is what matrix should be a diagonally dominant matrix. Okay, what is the reason for that? We'll discuss in this algorithm. Okay, so first the concept or the definition of diagonal dominance is basically a matrix Aij is said to be diagonally dominant if for each row. Okay, I am representing the row which I. Okay, so for each row I, the absolute value of the diagonal element is greater than or equal to the sum of absolute value of all other elements in the row. So it is what basically in a matrix you will have a row. This is what your row, and this is the column. I am representing the column with j and I with row, row with I. So basically, in the diagonally dominant case, all the diagonal entries should be greater than or equal. All the diagonal entries, whatever it is, formulate like this. All the diagonal entries I am representing with AII, or the absolute value. Either it is a -1, I will consider just its magnitude. That is what the 1. So basically, a 1 or the diagonal element should be greater than or equal, not strictly greater than, just greater than or equal to all other element, or the sum of all other element. It means for this element, I can say this is my diagonal element in this case, and this value should be greater than the sum of all remaining entries. Okay, so the square, this is what my diagonal element, it should be greater than or equals to this element and this element. I am representing, it is not 0, it is just an element. Okay, it is just in a symbolic form. So it is what the concept of diagonal dominant. It is for every row. Okay, not for only one row and two row. This is for each. So that's why the definition is what? A matrix A is said to be diagonally dominant if the diagonal entries or the absolute value of the diagonal entries should be greater than or equal to the absolute value of the sum of all other elements. Is it clear? Okay, this is what the concept of diagonal dominance. Now, in the diagonally dominance, okay, what is the requirement of diagonal dominant? We'll discuss it further. First, we are just go through with the what is the diagonal dominancy. So, next,
how to check the, like that is what the definition. By using the definition we can easily check and verify the, either my matrix is a diagonal dominance or not. So basically to check the matrix is a diagonal dominant, for each row sum the absolute value of all non-diagonal element. We'll just like just check it or just verify it by using a definition. Next, yeah, this is just what the steps are given in this slide. Okay. Next, if my matrix is not diagonal dominant, then how to convert it into a diagonal dominant? Okay, yeah, there is one example. Okay, this is what the example. This is what my matrix A, and these are the diagonal entries. Okay, clear to everyone? Now, 4 is greater than, or basically what sign will come, I don't know what is like what sign will come here. I will just sum, or this is what the absolute value, and I will sum the absolute value of -1 plus 2. Okay, and this is what 4 and this is 3. It is what strictly greater than, or either it may be equal. Okay, so this is what for my first row it is the true, it is what the diagonal dominance for only one row. Okay, in this way we'll verify for all the rows. So there are 3 rows, we'll verify in these 3 steps. Okay, so whenever all such cases are true, then it is called the diagonally dominant case. Is it clear to everyone? Okay, I think अगर कोई ऑनलाइन भी है तो उनसे मैं कनेक्ट करना चाहूंगा. Is it clear? Okay, you can chat. Okay, you can write a message in chat box. Okay, next. If my matrix is not diagonal dominant, then converting a matrix to diagonally dominance. If a matrix is not diagonally dominant, we can convert it by adjusting its diagonal element. Okay, we know the operation or swapping the row and column. Okay, it is what the row operations. So we can just swap the row element, yeah, the complete row and complete column to make it diagonally dominant. If by using that still it is not converted into the diagonal dominant, then we can use some algorithm in that case. Okay, first case is what कि आप row column को swap करके diagonal dominant में convert कर सकते हैं. Okay, the general approach is to make the diagonal dominance, yeah, make each diagonal element larger than or equal to the sum of absolute value of the non-diagonal element. is the basically row operations जिसको हम कहते हैं, वो हम row को use करके करने की कोशिश करेंगे. Okay, this is what my matrix B, that is 1 2 3 2 3 1 and 1 3 1 2. You can easily see in my first case it is what 1 and it is what 5. The sum of all other element is what 5. It is not strictly or not greater than or equal to 1. So it is just my first test case is just like fail. So it is what not a diagonal dominant matrix. So हम क्या करेंगे, इसको convert करने की कोशिश करेंगे. Yeah, it is false, it is true, but it is false. एक भी अगर उसमें false हो जाता तो it is not a diagonal dominant case. So basically हम क्या करेंगे, adjust the diagonal. So we'll just convert or we'll swap the row and we'll try to find कि ऐसा इसमें हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि अगर वो swap करने से अगर बन रही है diagonal dominant तो हम उसमें उसको convert करने की कोशिश करेंगे. और generally diagonally dominant वाले जो cases होते हैं उसमें swap करने से हो जाता है. Okay, so in my first row हमने क्या किया, increase the diagonal element to 5. So basically हमने क्या किया कि like जो हमारा row 1 है उसमें हमने जो conversion process यहाँ पे use किया. एक सेकेंड वेट. ओके, तो बेसिकली हमने क्या किया, यहाँ पे 3 प्लस जो भी हमारा डायगोनल डोमिनेंट है ना, उसमें हमने क्या किया है कि लाइक अगर आप इसको समझेंगे तो 2 + 3 हमें क्या चाहिए, 5 चाहिए ना, तो हमने उसको लेके लाइक देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल रेडियस. आई डोंट थिंक सो कि हमें वहां तक जाना चाहिए. तो सिंपल हमने क्या किया है कि जो हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू जो था, जो हमने फर्स्ट एंट्री थी ना, उसको इस तरीके से हमने उसमें कन्वर्ट करने की कोशिश की. आई थिंक देयर इज, है ना, इस स्लाइड में इतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया है, बट आई विल ऐड इट इनटू दिस साइड. ओके, प्रॉपर स्टेप्स इसमें नहीं डाले हैं, जस्ट डायरेक्ट लिख दिया है. स्लाइड में इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रखा है, बस जस्ट सिंपल आपको क्या करना है कि जो भी एलिमेंट है उनका सम लेना है और उसको मल्टीप्लाई करना है डायगोनल के एलिमेंट से. दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ द डायगोनल डोमिनेंसी. बट ये जनरली आपके केस में नहीं आएगा, क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है. वहां पर आपके पास में क्या होगा, एक मैट्रिक्स गिवन होगा, और अगर आप उसको गॉस-सीडेल से सॉल्व कर रहे हैं तो देयर विल बी अ डायगोनली डोमिनेंट मैट्रिक्स. अगर वो नहीं है तो हम यही तो करते हैं ना, अगर हमारा कोई एक मेथड फेल हो जाता है तो विल मूव टू द नेक्स्ट मेथड. जनरली यही करना होता है. अगर वो स्वैप करने से, रो को इंटरचेंज करने से अगर वो मैट्रिक्स बन रही है डायगोनली डोमिनेंस, ओके, नो इश्यूज. अदरवाइज गो फॉर सम
other method like Jacobi iteration, Jacobi iterative method and all. There is a concept of Jacobi matrix जिसमें हम गॉस सीडल को भी iterative method से solve करते थे. Like basically in the Jacobi matrix we'll have a D inverse and L plus U. I think मैंने lower and upper triangular matrix के बारे में discuss किया ना. तो ये वाला concept हम यहाँ पर use करते हैं. This is called the this matrix is especially known as H and it is called the Jacobi iterative matrix. We'll discuss it into the further lectures. तो बेसिकली एट द एंड हमें यहाँ पर इसमें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया. आई विल एडिट दिस कंटेंट. तो बेसिकली आपको क्या करना होता है, उसको रो स्वैप करके जो डायगोनली डोमिनेंट का वो बनाना होता है. अगर वैसे बन रहा है, अदरवाइज देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ स्पेक्ट्रल रेडियस, जो कि एक बहुत, अगर कोई मैट्रिक्स रो स्वैपिंग से भी नहीं बन रहा तो फिर हम स्पेक्ट्रल रेडियस एंड उसका यूज करके फिर हम उसको डायगोनल डोमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं. ओके, सो नेक्स्ट आवर एम इज जस्ट हाउ टू चेक, एंड चेक करने के लिए हमें पाइथन कोड लिखना है. So it is your aim how to write the Python code for this. So basically इसका जो algorithm है, I am explaining here what is the algorithm. So basically yes, first you have to define a matrix, और basically जैसे यहाँ पर function define करने के लिए बोला है, no need to define a function. Okay, you can proceed forward with direct. Usually just enter a matrix and then apply the formula. You have your mathematical formula is what the absolute value of aii, which is like greater than equals to the sum of all other element, or you can say all ij where I not equals to j. Okay, and I is running to the order of matrix. It should be a square matrix. Okay, is it clear to everyone? Okay, next हमने क्या किया यहाँ पर, फॉर लूप लगाया एक इसके अंदर. आई को हमने कहां तक ले लिया, मैट्रिक्स के ऑर्डर तक ले लिया, एंड इनिशियली हमने उस पे सम जो है इनिशियलाइजेशन कर दिया. अगर आप व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए इनिशियलाइजेशन है. ओके, एंड देन हमने क्या किया है, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर लाइक देयर इज फॉर लूप फॉर रो एंड देयर इज फॉर कॉलम. ओके, सो फॉर आई एंड जे देयर आर टू फॉर लूप्स हियर, एंड after that you will just check either you will just sum it. You will sum all the elements, all the other element where I is not equals to. You will use this syntax like I is not equals to j. Okay, this exclamatory sign is representing the not equal. I is not equals to j. Okay, so using that operation you can just identify what are the elements other than diagonal and you can sum it. Okay, and then you will just okay, you can just subtract from this. Okay, use this formula. if अगर मैं इसको इस तरफ लिखूंगा तो ये क्या होगा, जीरो से बड़ा आएगा ना सम, सॉरी डिफरेंस जीरो से बड़ा है या जीरो के इक्वल आ जाए. देयर विल बी टू केसेस ना, या तो डिफरेंस जीरो के इक्वल आ गया, ओके, जीरो से बड़ा आ गया, ओके. इफ इट इज if it is negative then obviously it is not diagonal dominant. Are you getting the point or not? हमने इसी फॉर्मूले को क्या कर दिया, इस तरफ ले आए, तो ये क्या बन गया, आई से दिस इज माय ए एंड दिस इज माय बी, तो a माइनस b का डिफरेंस क्या होना चाहिए, it should be greater than equals to 0. Okay, use this concept also, और simply आप identify कर लो क्या है diagonal element and इन दोनों का sum उससे बड़ा है या नहीं. You can check it by using if else condition. Okay, this is what your if and else condition से आप इसको solve कर सकते हो. This is just simple algorithm to check a matrix is a diagonal dominant or not, and last you will print your result, whatever your result is, yes or no. Can you write the code? लिख सकते हैं आप कोड. It is very easy to write. Just I think of like 4 to 5 line code are there ना, just दो for loop matrix के लिए, and at the end you will have a condition, if else condition. Okay, so this is what, yeah. Yes. Yes. Is less than or equal to, return false. Else that is for else. This is the statement for if and this is the statement for else. I think pseudocode is not also that much understanding wala na. This statement is just for else case. Okay, else करके आपको वाला कंडीशन लगाना है. ओके, मैं लिख तो रहा हूं ना यहाँ पे, ग्रेटर देन और इक्वल, द डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन, नॉट यूजिंग दिस एग्जैक्टली. आप जो अपना आइडेंटिफाई करो है ना, डायगोनल के एलिमेंट, सी
मैं बताता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, आप क्या करो, मैट्रिक्स आपके पास में होगा, आप डायगोनल के एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लो। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट चल रहा है i is equals to 0 and j is equals to 0, 1 and 2. I am using 3 cross 3 matrix. Okay, so in this case your I is equals to 0, j is equals to 0. You are identifying the diagonal element. Okay, आपने diagonal element ले लिया, ये a0 0 हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिया, एंड देन अदर देन दिस एलिमेंट, अब आपका आपका जो j होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, बिकॉज यहाँ पर j आपने वो क्या कहते हैं उसमें डायगोनल में आ जाएगा, j0 ना डायगोनल में आ जाएगा, तो j 1 से स्टार्ट होगा, तो अदर जो भी दोनों एलिमेंट है इन दोनों का आप क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे, एंड यू कैन कंपेयर दिस एंड दिस। आपको बस इसको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपेयर करने के लिए देयर विल बी अ सिंटैक्स, आप जस्ट उसके वैल्यूज को देख सकते हैं कि ए और बी आर इक्वल और नॉट। इफ इट इज नॉट इक्वल देन और या कंपेयर भी इक्वल की भी बात नहीं है, वो ग्रेटर देन और इक्वल वाला कॉन्सेप्ट आपको वहां लगाना पड़ेगा, अलग से इफ एल्स की कंडीशन लगेगी। अदरवाइज आप इसको थोड़ा मैथमेटिकली सोचेंगे तो आप डिफरेंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नो नीड टू कंपेयर, जस्ट डिफरेंस आया आपके पास में, मान लीजिए ये ए, मैं इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ए आई जे, ओके, माइनस sum of all other element should be greater than or equals to 0. If it is positive, greater than equals 0 means क्या? If it is positive, diagonally dominant. If it is equals to 0, diagonally dominant. If it is negative, not diagonally dominant. Clear? So try to write the code. Okay. Next. Okay. Next aim is what the Gauss-Seidel method. What is the Gauss-Seidel method? Basically, Gauss-Seidel method is just improvisation, and it is what the iterative process. What is the meaning of iterative process? We are finding, okay, in first step क्या करते हैं हम, we are finding the solution. Okay, मेरे पास में equations है and मैंने उसका एक solution निकाला. For instance, I am just consider my first iteration में मेरा a का वैल्यू 1 आया, b का वैल्यू 1, a1, b1 and c1 are my solution of the equation for 3 variable. Okay, so basically it is not exactly correct, because it is what the method in which we are using the initial case. We are using or we are giving a trigger point. It means we are starting from this point. हम 1 1 से भी इसको start कर सकते हैं, 0 0 से भी start कर सकते हैं. Okay, this is what the method in which initialization can be any point. It is what it will be always convergent for any point. Gauss-Jacobi method and Gauss-Seidel method. So basically in first step मेरे पास में जो solution है वो a1, b1 and c1 है. So I will use this as initial case. Okay, first मैंने क्या दिया, मान लीजिए 0,0,0 दिया है मैंने उसको solve करने के लिए. This is what my starter, और ये उसको start कर देगा, और first step के अंदर मुझे a1, b1, c1 आंसर मिला. I will use as a starter and I will put these solution in my equation or the system. I will get a2, b2 and c2. This will be more refined by the first iteration. This is what the iterative process. ये first iteration हो जाएगा, ये second iteration हो जाएगा. आप ऐसे जितना iteration perform करेंगे, that will give the better result. Okay, to your approximation or to your tolerance, whatever you are giving the tolerance. Okay, this is what the concept. So अब इसको formulate कैसे करना है उसके बारे में हम आते हैं, because that is our main point. हम क्या करेंगे यहाँ पे, okay, इसके लिए एक तो strictly diagonally dominant होना चाहिए, matrix should be diagonally dominant and a symmetric and positive definite. Okay, basically positive definite का मतलब सिंपल यही होता है कि जिसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव हो और ऑल आइगन वैल्यूज आर नॉन नेगेटिव बेसिकली. ओके, दैट इज व्हाट द पॉजिटिव डेफिनेट, एंड एक सेमी पॉजिटिव डेफिनेट भी होता है, अभी उसमें इतना नहीं जाना, आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, मैट्रिक्स डायगोनल डोमिनेंट होना चाहिए. दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट. सो बेसिकली यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, दिस इज व्हाट आवर सिस्टम. तो इसको हम देखते हैं कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जो हमारा गॉस सीडल मेथड है. दिस इज व्हाट माय इक्वेशन. ओके, तो मैं आपको एक जनरल केस यहाँ पर बताता हूँ. ओके, जनरल केस में आपको बताता हूँ और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम गॉस सीडल मेथड में उसको सॉल्व करेंगे. ओके, तो बेसिकली आई हैव अ इक्वेशन. देखो एक सब इधर देखना. सो a11x प्लस a12y प्लस a13z इज इक्वल्स टू d1. ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, a21x a22y प्लस a23z इज इक्वल्स टू d2. a31x a32y and a33z. Like this is my general system of equation in 3 variable and
three equations. Okay, I will use this. हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है. तो सिंपल हम क्या करते हैं, x को फ्री करेंगे. क्या करना है, x को फ्री करना. ओके, सो x फ्री कैसे होगा, a11 x इज इक्वल्स टू d1 माइनस a12 y minus a13 z, and then x is equals to d1 upon a11, or you can write 1 upon a11 d1 minus a12 y a13 z. This is your x value. Next, y is what, 1 upon, what is the diagonal value, a22, and this is what, minus 21x. Are you getting? माइनस या क्या हो जाएगा, a23z ना. ओके, एंड नेक्स्ट रिपीट, बताओ, a33 डायगोनल एलिमेंट. ओके, d3, this is d2, and a31x minus 32y. These are your values. Clear? So ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया. Now अब आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कैसे करना है. तो आप क्या करेंगे, कोई एक इनिशियल गैस कंसीडर करेंगे. सो इन गॉस-सीडल मेथड, गॉस-सीडल मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जितने भी सॉल्यूशंस है एक ही वायर में आप x y z का वैल्यू निकाल सकते हो. इन वन स्टेप यू कैन फाइंड x y एंड z. हाउ, my initial guess is what, x y z transpose. I am considering it as transpose because of that it is what the column vector I am writing in the row vector. So it will be 0 0 and 0. If it is starting from 0 0 0, okay, just tell me what is the value of x. Okay, this is what, n. This is n. What is, this is not power, this is the, for iteration, this is the number of iteration. Okay, and this is also n. Okay, this is my x 0 0, this is my y 0 0, and this is what, z 0 0. Are you getting the point? This is what my initial 0. Okay, and this is what, n plus 1, n plus 1, and n plus 1. Is it clear? Now if I will put n is equals to 0, then what will happen, x1 y0 z0, then the value of d1 is what, x1 is what, d1 upon a11. Is it clear? Okay, next, what is the value for this, for n is equals to 1, y1 is equals to d. Clear? And next, z1 is what, you can find all the values in just one step by choosing the initial guess 0 0. You can use 1 1 1 here, no issues. Is it clear to everyone? 2 2 2, it will always converge, no problem. You can use any type of initial condition for this. Clear? Okay, next क्या करेंगे, अब यहां से जो आपको वैल्यू मिला है ये वाला, now you will put n is equals to 2, then what you will get, x2 y2 and z2. Is it clear? Okay, I am writing the wrong way na. Okay, like second iteration. Okay, n is equals to 0 पुट करने पर ये मिल रहा है आपको. Okay, then n is equals to 1 पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, that like x2 y2 and z2. Okay, now we'll put this value x1 because here it is 2 1 1. Clear? अब हमारे पास में ये वैल्यूज है ऑलरेडी, इन वैल्यू को हम और करेक्ट करेंगे. तो वापस से इन सारे प्रोडक्ट को उठाया, हमने मशीन में डाला, इट विल गिव यू द मोर करेक्ट आंसर. वापस से हमारे पास में जो आंसर आएगा, विल पुट इट इनटू अ मशीन. दिस इज व्हाट माय मशीन, दिस इज माय मशीन लुक लाइक. ओके, इस मशीन में हमने ये चीजें डाली, हमें ये मिला, वापस से जो हमें मिलेगा उसको वापस इसमें डालेंगे, हमें मिलेगा. ऐसे करते करते जब तक आपका जो भी रिक्वायर्ड टॉलरेंस है वहां तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आपको प्रोसेस रिपीट करना है. इज इट क्लियर? समझ में आया? दिस इज कॉल्ड गॉस-सीडल मेथड. ओके, इन एडिशन आई वांट टू explain Gauss-Jacobi method. That is what, in Gauss-Jacobi method
we will use, we'll find x1 from here by by putting n is equals to 1. We'll use this x as here. It means whatever value we have calculated in the previous step, we'll use it into here. Are you getting the point? हमने यहां से जो, अब हम इसमें z तो 0 रखेंगे, बट हम x 0 नहीं रखेंगे, बिकॉज ऑफ दैट वी हैव x वैल्यू इन आवर प्रीवियस स्टेप. At the end, we will have the value of what? The value of x and y also. We'll use this. This is what the Gauss-Jacobi method. Okay, it is also iterative method. This is Gauss-Jacobi method on the simple case. We can solve this using the matrix case. That is what my Gauss-Jacobi matrix is called. H is equals to what? Minus of D inverse L plus U. This is lower matrix, this is upper matrix, and this is diagonal matrix. Okay, this is the main theme of basically system of linear differential equations. न्यूमेरिकल मेथड्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं. बस आपको ये वाला फॉर्मूला एंटर, एक फॉर्मूला, इसको जनरलाइज करोगे तो कैसे बनेगा, यू कैन सी. इसको जनरलाइज करो कैसे बनेगा. ये क्या आ रहा है, 1 i j plus 1 i j, और वो जो j ले रहा है उसमें एक और एक्स्ट्रा ऐड करना है, इसमें j plus 2. ओके, इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0. ओके, अभी मैं स्यूडो कोड भी आपको शो कर दूंगा. तो बस एक जनरल फॉर्मूला आपको एंटर करना है, 2 लूप लगाना है, एक कोड बनाना है. ओनली 3 to 4 लाइन का कोड है. बहुत सिंपल एंड वेरी पावरफुल मेथड. इज इट क्लियर? डोंट गेट कंफ्यूज विद Gauss-Seidel एंड Gauss-Jacobi. Gauss-Seidel में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट सब में इनका यूज करते हैं, विल गेट इन one step all the values. We'll correct this value in the next step. This is what the iterative method. Is it clear to everyone? Okay. Next. So PPT में देखते हैं. We have here sorry. Yes. So this is the simple concept. You can start with the initial guess 0 0 and 1 1. This is what the scheme and ये solution है. इसको हमने solve किया. वापस से next time हमने उसी solution को as a XYZ use किया और वापस हमने उसका solution निकाला. Next आगे बढ़ते हैं. This is what the pseudo code here, and in the pseudo code you can see this is the simple code. हमने क्या किया, इसको just generalize कर दिया है. P element को diagonal. P is what my diagonal entries. इसको हमने इस टाइप से represent किया. Oh sorry, P is what my vector. D1 D2 are here. That is what the P. और उसमें हमने इसको डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, ये वैल्यू मिला. तो जनरली दिस इज द कोड ओनली फॉर 0 0 व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0. ओके, 0 0 से स्टार्ट करेंगे तो यही नहीं हो जाएगा आपका नेक्स्ट आंसर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो इट इज इजी टू राइट विद 0 0 इनिशियल गेस बिकॉज सीधा x1 आपको ये मिल रहा है एंड देन यू विल यूज दिस इज इनटू द नेक्स्ट स्टेप. क्लियर ना? ओके, so this is the simple code. Try to write this code and this is what the concept. And आपको pseudo code Google Colab पे भी मिल जाएंगे. This is all from my side about the Gauss-Seidel method and diagonal dominant. Now your task is to write the code for diagonal dominant and for Gauss-Seidel method. Okay? किसी को कोई डाउट? समझ में आया सबको? छवि सो गई है? Yes, Gauss-Jacobi is always better because उसके अंदर मतलब काफी अच्छा पॉइंट बताया. दैट इज मैं ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला था. बेसिकली Gauss-Jacobi के अंदर है ना, हमको आपको कम आइटरेशन की जरूरत पड़ेगा बिकॉज यू आर रिफाइनिंग योर सोल्यूशन विद इन दी स्टेप. ओके, आपने पहले एक स्टेप में इसको क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन निकाला एंड यू आर रिफाइनिंग इट इनटू द नेक्स्ट स्टेप. Gauss-Jacobi में आप डायरेक्ट उसको रिफाइन करते जा रहे हैं और वो मोर एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा. और कन्वर्जेंस कंडीशन भी, अगर मैं ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस मुझे अभी तक एग्जैक्ट इसका याद नहीं है अभी, बट एक्चुअल में ये जो आपको देगा ना, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता सकता हूँ कि इसमें आपको 15 to 25 आइटरेशंस लगेंगे. नॉर्मली 20 to 25 आइटरेशन लगेंगे डिजायर्ड एक्यूरेसी के लिए. उसी को Gauss-Jacobi से आप जस्ट 3 to 4 आइटरेशन में कंप्लीट कर सकते हैं. तो यू कैन थिंक ओवर इट कि कितना इसका कन्वर्जेंसी रहता है. समझे ना? दैट इज व्हाट द कॉन्सेप्ट. और जो मैट्रिक्स के साथ में होता है उससे, और वो जो बताया ना माइनस डी इनवर्स एल प्लस यू, उसके साथ भी जो होता है उसमें आपको और अच्छा रिजल्ट मिल जाता है. ओके, दैट इज व्हाट. आप इसमें प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करो बिकॉज आई हैव सॉल्व वन क्वेश्चन फॉर माय प्रॉब्लम बेसिकली.
तो उसके लिए मुझे उस टाइम पे जब देखा तो मुझे पता चला लिटरली एक टाइम पे आपको 15 से 20 आइटरेशन करने पड़ रहे हैं और एक टाइम पे आपको सिंपली 4 to 5 आइटरेशन में यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर. That is what the, yeah, it is also for your exercise for after the Jacobi method. Okay, so this is all from my side. आप यहाँ बैठ सकते हैं, कोड लिखे अच्छे से, समझने की कोशिश करें कि क्या है. पीडीएफ आपको यहाँ शेयर हो जाएगा. वैसे ये स्क्रीन पे आपके हैं. अभी आप क्या टाइम हो रहा है? ओके, यू हैव 10 to 15 मिनट्स. ट्राई टू राइट द कोड. देयर इज एनी डाउट मेरे से कांटेक्ट कर ले, पूछ ले, और किसी से भी कांटेक्ट करेंगे वैसे हमारी टीम में से बता देंगे आपको. और एट द एंड अब सिंपल सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि हमारे पास में 3 to 4 सेमिनार्स और होंगे ऐसे इसी टाइप के, मतलब 2 वीक्स और 3 वीक्स मोर देन ऐसा चलेगा. और हो सकता है हम 1-2 ऐसे सेमिनार्स को ना वीकेंड पे अरेंज नहीं करके हम थोड़ा पहले या थोड़ा बाद में जो वर्किंग डेज है उनमें कर ले, बिकॉज थोड़ा सा टाइम का इशू है और मैं भी यहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, दैट्स वाई. तो हम क्या करेंगे कि इसको कभी वर्किंग डेज में ओनली ऑनलाइन, नॉट ऑफलाइन, ऑनलाइन हम उसको कंटिन्यू करेंगे. हो सकता है वो लाइक 25 और हाफ एन आवर का मोस्टली एक सेमिनार होगा जिसमें मैं आपको एक मेथड एक्सप्लेन करूंगा सिंपल. जैकोबी मैंने आपको समझाया, नेक्स्ट टास्क विल बी जैकोबी मेथड. बस मैं उसकी थ्योरी बताऊंगा, कोड बताऊंगा, आपको कोड लिखना है. दिस इज व्हाट द ऑल द मैटर ऑफ द अंडरस्टैंडिंग. आपको बस समझना है और उस पर काम करना है. ओके, क्लियर. 3 to 4 क्लासेस हैं. आप जो भी नहीं आ रहा उनको बता दो, क्योंकि उनकी पहले अटेंडेंस अगर लगी है दे विल गेट द सर्टिफिकेट. अदरवाइज absolutely will not give the certificate. Okay, test जो भी आपके आता है असाइनमेंट प्रॉब्लम, हम उनको ट्राई टू सॉल्व इट. एंड ऑफ कोर्स फॉर एमएससी गाइस इट इज वेरी हेल्पफुल. You will I think you have faced your coding problem in your lab and all. Okay, रिकॉर्डिंग भी वहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हो उस पर जो भी अवेलेबल है, कंटेंट अवेलेबल है. दिस इज ऑल अबाउट मी फ्रॉम माई साइड. ओके, थैंक यू.